Hello people, this is Sakshi and welcome again to the channel PNST. For those who are new here, I am a first year BSc nursing student at GMC BHOPAL. In this video, we're gonna be discussing about the 5 points that you should remember before starting any chapter or before starting NCERTs. So, without any further delay, let's get started. NCERTs are the key to clear any of the examinations. So in these initial days of our preparation, our first aim is to at least complete all the chapters once. आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इससे कोई profit होगा? So yes, these initial days you don't need to make any of the notes. The first aim is to read all the chapters at least once. So in this section, we are taking example of the biology section. So we have to complete all the chapters at least once. What I am suggesting to you is कि 11th class के 22 chapters of biology and plus all the 16 chapters of class 12 biology. ये chapters आपको initially complete करना है, which means कि you have to read them at least once. और ये chapters में आप ज़्यादा time नहीं लेंगे. And we will discuss all these things and how to complete these chapters initially. We will discuss in the further section. So before moving to the next section, don't forget to hit that subscribe button below and to like this video. So moving to this section, which is we're going to be discussing about the 5 steps that you should remember before starting any of the chapters. Step number 1, reading a new chapter. So choose any chapter, but remember that this chapter should be equally important. Don't start with a very easy or very tough chapter. So either what you can do is start from chapter number 1 or from the chapter that you like and carries a high weightage in the examination too. Step number 2, skimming through all the topics. Means आपको initially करना ये है कि you don't have to make notes or anything. Just आपको एक chapter open करना है और firstly you have to read all the topics and all the headlines and the subtopics in this chapter. मीन्स इनिशियली आप लोग एक चैप्टर को लीजिए और उसमें जो भी हेडलाइंस और जो भी टाइटल्स आपको गिवन है बस उन टाइटल्स को रीड कीजिए और उन सब टॉपिक्स को रीड कीजिए. स्टेप नंबर 3, नाउ यू हैव टू लुक ऑल द डायग्राम्स दैट आर गिवन इन द बुक एंड दैट इंटरेस्ट यू अ लॉट टू. So for reading those diagrams, firstly read the titles of these diagrams and the lines and important notes written just below these diagrams. So it will be difficult a lot, means starting में आप लोगों को पता नहीं होगा कि what are the chapter that we are going to start और ये diagram है किस use के लिए. But we just have to train our brain for this. So स्टार्टिंग में इनिशियली बस आप लोग डायग्राम को चेक कीजिए, उसकी प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिए एंड देन रीड द बेसिक लाइन एंड द टाइटल गिवन इन दिस डायग्राम टू. इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बस आप लोग उन चैप्टर्स के डायग्राम्स को देखिए और बेसिक लाइन्स को रीड कीजिए. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द डायग्राम, सब टॉपिक्स एंड द हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर कम्स द स्टेप नंबर 4, रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस. अब आपको करना ये है कि यू हैव टू गो टू द लास्ट पेजेस ऑफ दिस बुक, मीन्स द लास्ट पेजेस ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट यू कैन रीड ऑल द क्वेश्चंस एटलीस्ट वंस और ट्वाइस. अब ये तो पक्का है कि आप लोगों को उस टाइम पे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट डोंट गेट सेड. वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस एटलीस्ट वंस और ट्वाइस. इससे पता ये चलेगा कि आप लोगों को आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो उस चैप्टर में गिवन है उनका एक रफ स्केच मिल जाएगा. विच मीन्स कि अब आपको सब टॉपिक्स, टाइटल्स और डायग्राम्स तो पता है. सो यू विल गेट अ रफ आइडिया ऑफ व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर टू. After finishing and after reading all those questions once or twice, what you have to do is step number 5, read the summary. हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से पहले एक शॉर्ट समरी दी गई होती है उस चैप्टर के लिए. सो नाउ यू हैव टू रीड दैट समरी टू फॉर गेटिंग अ रफ आइडिया ऑफ ऑल द थिंग्स दैट मैटर्स इन दिस चैप्टर द मोस्ट. सो उन समरी को रीड कीजिए. नाउ यू विल गेट अ प्रॉपर प्लान फॉर व्हाट आर द चैप्टर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, what are the topics that are important, what will be the diagrams that I will be asked, or what are the questions that are asked frequently for this chapter. So after finishing all these 5 steps, firstly you will go to the headlines, then you will go to the subtopics. In the second step, you will go and remember all these diagrams at least once and try to understand
just a little bit. डायग्राम्स की बेसिक लाइंस और उनके नीचे जो भी सब टॉपिक्स गिवन होते हैं उनको रीड करना बिल्कुल मत भूलिए. डायग्राम्स की बस लेबलिंग और उसकी प्रोसेस को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए. In the next step or the fourth step, what you have to do is reading all the questions to get a rough idea of what are the important topics that are given in this chapter and reading the summary in the last. And by completing all these 5 steps, you will get a proper plan in your mind that how you are going to start this chapter and how much time will it take to complete it. In the next video, we will discuss about how to read the chapters after skimming and after completing all these 5 steps. So, don't forget to hit that subscribe button below. This is Sakshi. That's all for today. Do like this video and share it with your friends. And don't forget to hit that subscribe button below. That's all for today. This is Sakshi and I will catch you in the next video.